remaining part of emotional intelligence. Where did we finish in emotional intelligence? Self-motivation. Okay. Goleman had given these 5 characteristics. 5 थे, 2 कर चुके हैं, 3 रहते हैं. Number 1, self-awareness, that we have done. Number 2, self-motivation, that we have done. Now number 3. Self-regulation. Self-regulation is the third part. Self-regulation implies the ability to delay one's gratification and work incessantly. Incessantly means non-stop. Tirelessly. अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो दूसरा शब्द है tirelessly. Toward the realization of futuristic goals. Toward the realization of futuristic goals. Work incessantly towards the realization of futuristic goals. This is how we describe self-regulation. It prevents the individual from becoming the prisoner of his feelings. Prisoner of his feelings. Civil services, when it becomes an obsession, you have become the prisoner of your feeling. The point is this. As long as it is ambition, fine. But when it has become obsession, you have become the prisoner of your feeling. So it prevents the individual from becoming the prisoner of his feelings. It results in appropriate emotional investment in various pursuits.
and enables the individual to relate with others in a fair and just manner. Fair and just manner. It helps to build trust and togetherness. It helps to build trust and togetherness. That is what self-regulation does. Now, after self-regulation, the next point is empathy. Empathy is the ability to understand the feelings of others and re-experience them in oneself. Empathy along with self-regulation. Empathy along with self-regulation promotes teamwork, team spirit, cooperation, cooperation, and integrity. And integrity. ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, हाउ टू रेगुलेट, सेल्फ रेगुलेट वन सेल्फ. बट वेल, अवेयरनेस बिल्डिंग इज फर्स्ट एक्सरसाइज. Without awareness building, self-regulation will not come. Second is realistic goal setting. And third is positive self-talk. वो end में करेंगे. Steps to improve or means to improve emotional intelligence. Yes, Abhobit. This is empathy. Now next is, after enjoying empathy, social skills. Social skills.
skills needed to manage human relationships effectively. Skills needed to manage human relationships effectively. Now, what are the skills needed to manage human relationships effectively? Number one, you can win the confidence of others only when you are confident yourself. Self-confidence. Second, please lend your ear to me. Effective listening. बहुत कम लोगों के अंदर ये है साहब. थर्ड, पेशेंस एंड टॉलरेंस. जिनको बार बार सूसू जाने की तलब लगती है, उनका क्या है, पेशेंस टॉलरेंस ही तो कम है. ये साहब, और मना भी नहीं कर सकता, कम वक्त यहां कर गया तो और आफत है. देखिए, क्लास लेनी मुश्किल हो जाएगी. पेशेंस एंड टॉलरेंस की बात है. ऐसा है साहब. रिश्ता बनाने की चौथी कला. Okay. The fourth thing that can help, have an exciting relationship is this. Communicability. एक बार मुंह खोलो तो लोग कहें एक बार और खोल दो. Okay. That is communicability. This is communicability. Once you open your mouth, people say, I want to have the glimpse of your tongue once more. This is communicability. That is communicability. Number 5. बहुत इंपॉर्टेंट है. सेंस ऑफ ह्यूमर. द एबिलिटी टू सी द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ. समझ में आ रही है ना? साइड हैवी मत देखो, जो साइड लाइट है वो देखो, और जो हैवी साइड है वो भी लाइट में देखो. That is sense of humor है. बहुत इंपॉर्टेंट है साहब. टू सी द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ. Number 6. That is also very important in relationship. अनकंडीशनल रिगार्ड फॉर अदर्स. देखो जी, जो आदमी जजमेंटल होगा ना, उसकी कंपनी आप पसंद नहीं करोगे, क्योंकि हर बात में जज करता है. देखो तुमने निक्कर कैसे पहनी है. अरे ये मत देख कि निक्कर कैसे पहनी है, ये देख कि निक्कर सही जगह अटकी है या नहीं. ये इंपॉर्टेंट है. पहनी कैसे भी हो, अगर अटकी हुई है तो काम चल रहा है. जिस चीज को छुपाने के लिए पहनी है वो चीज छुप रही है, तो गोल हमारा अचीव हो गया. पर लोग क्या है, जजमेंटलिज्म है. समझ गए ना बात आप? वेरी बैड. अनकंडीशनल रिगार्ड फॉर अदर्स. नंबर 7. दिस ऑल्सो क्वालिटी यू नीड टू पोजेस.
openness to the views of others. Tactfulness. Now, this is a very important point. It implies delicate perception of what the given situation demands and the ability to act accordingly. Delicate perception of what the given situation demands and the ability to act accordingly. This is there. Tactfulness. Agreeableness. Agreeableness means I play win-win game. I make sure that by and large I agree with others. Unless and until there are reasons for strong disagreement, I prefer not to disagree. This is how it is. Other people are always, there are some people, or in fact most people, will always oppose your position. जैसे आपने कहा जी दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है तो मैं क्या करूं? अब ये क्या जवाब है भाई? पोल्यूशन बहुत है तो मैं क्या करूं? भाई कन्वर्सेशन कहीं से तो शुरू करोगे ना साहब. अब तुम कह रहे मैं क्या करूं? हाँ, उससे ज्यादा बदतमीज जा मर जा. अरे पोल्यूशन ज्यादा है, जा मर जा. टैक्टफुलनेस का बेटा मतलब ये है, देखो जी ऐसा है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे अच्छा मानते हो या नहीं. यू नीड नॉट आस्क द पर्सन वेदर यू लाइक मी और नॉट. प्लीज ऑब्जर्व द बॉडी ऑफ द पर्सन and you will get to know this is tactfulness. I need not ask you that what you want. By observing your conduct, I can know that this is what you demand and ability to do accordingly. For example, sir, your common sense should tell you that in funeral ceremony, if you are attending, it should not be bright red shorts and yellow t-shirt. Okay, ये और अगर मान लो पहन के पहुंच भी गए फ्यूनरल ग्राउंड में, आपने देखा जी सारे श्वेत वस्त्र में, ऑल इन आर इन वाइट कवर, यू डिस्कवर यू आर यूनिक. सो देयरफॉर यू ऑल्सो डिसाइड टू गो टू द नियर बाय मार्केट, परचेज द क्लोथ्स एंड देन चेंज देम एंड कम. दिस इज टेक्टफुलनेस. ये साहब आपको बताने की थोड़ी ना जरूरत पड़नी चाहिए. ये है भाई, अब टेबल में बर्तन पड़े हैं, आपको पता है गंदे दिख रहे हैं, उठा के रख दो साहब किचन में. तो ये टेक्टफुलनेस है ना. वेट कर रहे हो, हाँ जी तू उठाएगा मैं उठाऊंगा. देखो बेटा एक बात है, तेरे हिसाब से कुछ भी हो, बात यह है जिंदगी की बात यह है कि जो सच है उसी को परसीव करो. जैसे अगर ये मैं तुझे दिखाऊं और तुम कहो सर ये शिवलिंग है, तो आप क्या पागल हो? अगर इसको शिवलिंग देख रहे हो, इसको पेंसिल देख रहे हो तो थोड़े कम पागल हो. इसको कुछ और चीज देख रहे हो तो और भी पागल हो. और अगर इसको आप स्टाइलस बोल रहे हो तो आप सही हो. आप समझ रहे हो मेरी बात? तो परसेप्शन बेटा ये है, जितना रियलिटी का परसेप्शन डिस्टॉर्टेड होगा दिक्कत उतनी होगी. इफ योर परसेप्शन, देखो ये मैटर नहीं करता व्हाट योर परसेप्शन इज. क्वेश्चन इज डज इट कॉरस्पॉन्ड विद रियलिटी और नॉट. Because if your perception does not correspond with reality, outcome will be social maladjustment.
प्लीज अंडरस्टैंड. भाई जो फैक्चुअली लोडेड चीजें हैं उनमें रियलिटी है. अब आप देखिए प्रॉब्लम क्या है, आप जब परसीव करते हो तो अपने इमोशंस को साइड नहीं रख पाते. आपके इमोशन आप पे बढ़ चढ़ के बोलते हैं. इसका मतलब यह है इंसान आपकी या मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस कम है, यह मतलब है. समझ रहे हो ना बात आप. अब देखिए फ्यूनरल सेरेमनी, उसमें जोक थोड़ी ना क्रैक करोगे आप. ये तो डिमांड है ना सिचुएशन की. इट इज अ सॉलम ओकेजन, यू मस्ट रिलेट टू इट विथ सीरियसनेस. द पॉइंट इज दिस. ये डेलिकेट परसेप्शन है, ये मतलब है. बेसिकली क्या है कि जो आदमी टैक्टफुल होगा ना, ही विल बी वेरी सेंसिटिव पर्सन. He will understand what situation demands. He will also understand what people demand. You can see this, that some people are able to come up with exact things which you were thinking about, and they do it on more than one occasion. They are tactful. They understand. And unfortunately, many of us are not tactful because we are selfish. ये है, इसलिए हमारी tactfulness सफर कर रही है. नहीं, वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसमें आप देखो वर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या लिखा हुआ है, इंपैथी इज एन इंटेग्रल पार्ट. लिखवाया नहीं अभी इससे पहले आपसे. यह सोशल स्किल्स की रेलिवेंस तभी है जब आपके पास इंपैथी है. जब इंपैथी नहीं है, आप अगर इंपैथी नहीं है तो चालाक तो हो पर इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो. देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. आई एम मैनिपुलेटिव, I am cunning, I have the ability to use people. Now that is not equal to emotional intelligence. Emotional intelligence will invariably require quotient of empathy. That is why empathy is an integral part. Please understand. And I tell you, if you are selfish and you are tactful, then in that case your deception will be noticed by the world sooner or later. And people will never be comfortable in your company because they will see an air of artificiality in your conduct. You are artificial. ये रीजन है सर. समझ गए जी बात. नंबर 10, conscientiousness. I uphold my promise. I am stickler to the rules, laws and regulations. Conscientiousness means a person who is committed to certain principles. Such individuals will be there. They are committed to the principles. They will not change the things as per the demands of the situation. अब आप ये मत सोचना सर ये तो टैक्टफुलनेस के अगेंस्ट हो गया. अरे प्रिंसिपल से कमिटेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि विद इन द प्रिंसिपल से एडजस्टमेंट नहीं करेंगे. ये मतलब है. समझ गए ना बात आप. यू कैन स्पीक द ट्रूथ ऑल्सो इन अ वे दैट इज पोलाइट. प्लीज अंडरस्टैंड. रादर देन कंडेमिंग द स्टूडेंट फॉर हिज परफॉर्मेंस. अरे तेरे दिमाग में गोबर भरा हुआ है, क्या आंसर लिखा है ये. एक तरीका ये है, दूसरा तरीका बोलने का ये कम्युनिकेबिलिटी, टैक्टफुलनेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कमिटमेंट सब में आता है. तीनों मिला के हैं. आई टेल द स्टूडेंट दैट यू नो देयर योर एफर्ट नीड्स सम इंप्रूवमेंट एंड यू नीड टू not only improve your writing skills but also your knowledge base. Now this is more comfortable for the person to accept. Are you getting my point or not? This is tactfulness. But at the same time I am being sincere. I have not told student something which he is not. I told him that he needs an improvement to be done. The point is this. So these are various social skills. Now we start with the last segment, and that is emotional intelligence and governance. This is the last segment.
All governance is people's governance. All service is public service. Relationships are the DNA of governance. And a successful administrator is one who can manage relationships effectively. Who can manage relationships effectively. This is the understanding we presently have. ठीक है? This is the understanding we presently have. Now, to arrive at this understanding, there were some developments that took place. Now, let us have the glimpse of those developments. Our understanding of human nature started with this analogy. That man is a machine. Now, because man is a machine, and machine does not require emotions to run. Therefore, there is a need to eliminate emotions from the work settings. There is a need to eliminate emotions from the work settings. And the two champion figures who advocated this idea, one was F.W. Taylor and second was Max Weber. Both of them advocated dehumanization and depersonalization of work. Means from the work settings, eliminate human element, eliminate personal element. That is what they stated. Human element and personal element should be eliminated from work. हाँ तो यार हम तो बता रहे हैं डेवलपमेंट कैसे हुआ इमोशनल इंटेलिजेंस का। शुरू में एक आइडिया होता है, उसके बाद दूसरा आइडिया आता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप, दे आर द कॉग्स इन द लार्ज मशीन, वो भी बता रहे हैं आप, धीरे धीरे बताएंगे। पहले ये आइडिया थोड़ी ना था कि मैन इज अ मशीन दैट रिक्वायर्स इमोशंस टू फायर। ये तो आज पता चला है ना कि तेरे अंदर इमोशन है जो तेरे अंदर की ज्वाला को जलाए रखते हैं। ये तो अब पता चला है ना साहब, पहले तो ये आइडिया था कि मैन इज अ मशीन। ये मतलब है
This development took place slowly. See, the period between 1900 to 1940s, 50s was with this idea only that man is a machine. Today the idea is different. Today the idea is ये आज का आइडिया है, मैन इज मोर देन अ मशीन. आज का आइडिया एक और है, मैन हैज अ मशीन. इसमें इतनी खुश होने की बात क्या है? मैन हैज अ मशीन एंड ईच मैन यूजेस हिज मशीन डिफरेंटली. ये अब का आइडिया है. And the machine that is most respected machine which you possess, आपके पास सबसे बेहतरीन मशीन क्या है वो आप बताओगे. बेटा बताओ. अरे ना, सही जगह तुमने हाथ किया. इन्होंने सही जगह दिशा दी. Fortunately your finger went up and not down. This is perfect answer. Brain. अगर किसी ने कोई और मशीन की तरफ सोचा तो वो बर्बाद है. ये है मशीन. ये आज की तारीख में साहब, नो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैन टेक प्लेस विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ इमोशंस. पर ये तब आइडिया नहीं था जब टेलर और वेबर थे. देन दिस आइडिया वाज नॉट डोमिनेंट. समझ में आ रही है ना बात? धीरे धीरे शिफ्ट होता है सर. मैं तो आपको 3 लैंडमार्क डेवलपमेंट्स बता रहा हूं जिससे ये अंडरस्टैंडिंग हुई, जिसमें से 2 उस जमाने के हैं जब माना जाता था मैन इज अ मशीन. टेलर एंड वेबर. नाउ टेलर came up with scientific management principles. Scientific management. And the essence of scientific management principles was elimination of time and motion waste. It resulted in elimination of time and motion waste. Means whenever you do work, you must make sure that the work you do results in minimum movement which is unnecessary. Because when you will cut down on unnecessary movement, you will save time. Save time means more productivity. For example, if you have to hold your, say, right here, so take your right hand and hold it like this and not like this, which is waste of effort. ये था मतलब. Now these principles of scientific management given by Taylor resulted in increase in job productivity. That is why he said, make them work like machine. It resulted in job productivity, but it also made the work monotonous. The work became boring, and eventually resulted in increase in
dissatisfaction, which eventually was harmful for productivity in longer run. Increase in job dissatisfaction, which was harmful for productivity in longer run. ये डेवलपमेंट हुआ जी, समझिए जी बात। क्योंकि जब वर्क की बिल्कुल आपने आदमी को मशीन बना दिया, उसको कोई फ्रीडम खत्म कर दी उसकी, यू फिनिश्ड हिज फ्रीडम, तो ऑब्वियसली दिस विल हैपन। Taylorian way is used by many teachers also. They make sure that, well, there is what is called as point-to-point information presentation with all seriousness. Okay, and students are made to keep writing the information with minimum explanation so that syllabus is done in minimum number of classes. वो टेलेरियन वाले हैं, समझ गए ना साहब? क्योंकि वो कहते हैं जी हम एनर्जी बचा रहे हैं, बच्चे की टाइम बचा रहे हैं, ये टाइम वो है एग्जाम के लिए समर्पित करेगा। He will dedicate this energy for preparation for the exam. एक अप्रोच ये भी है और ठीक भी है कुछ लोगों के लिए। आज भी इंडियन इंडस्ट्री में कई जगह टेलर चलता है, many places टेलर वर्क्स। Weber also followed the same idea. He said, emotions need to be eliminated from the conduct of the bureaucrats if bureaucratic efficiency has to be realized. Emotions need to be eliminated if bureaucratic efficiency has to be achieved. That is what he said. If bureaucratic efficiency has to be achieved, emotions need to be eliminated. यह उनका आइडिया था. But what was observed because of elimination of these emotions, that while bureaucratic efficiency was not achieved, but bureaucratic apathy was achieved. Bureaucrats became apathetic. Efficiency achieve नहीं हुई, bureaucratic apathy got achieved. सर समझ रहे हो ना बात आप? ये था क्योंकि वर्क इम्पर्सनलाइज हो गया सर, इम्पर्सनलाइज हो गया, डीह्यूमनाइज हो गया, ह्यूमन एलिमेंट खत्म कर दिया वर्क से. भाई वर्कर मुस्कुराएगा भी, आंख भी लड़ाएगा, हाथ भी ऊपर नीचे ले जाएगा, इशारा भी करेगा, ये वर्क का पार्ट है. आपने उसको मशीन बना के रख दिया. लोग कह रहे हैं सर जिंदगी बर्बाद हो गई हमारी. तो ये साहब, द पॉइंट इज दिस, bureaucratic efficiency was not achieved, rather what was achieved was bureaucratic apathy. And then this scene changed because this realization dawned upon that man is more than a machine. Man has a machine and each man uses his machine in his own unique way, and that is why some people who use their machine in a manner where they can bring happiness in the world, they are called as creative people. देखो कुछ लोग हैं बिल्कुल जादूगर हैं अपनी मशीन के साथ. They are creative people. They are able to create something amazing from their system. And these are the people who are called as genius. That is how it is, sir. हाँ, फेवरेटिज्म के अगेंस्ट, क्योंकि इमोशन से फेवरेटिज्म आएगा, न्यूट्रलिटी कॉम्प्रोमाइज होगी. आप समझ रहे हो ना बात आप? हम ये कह रहे हैं इमोशन को एलिमिनेट नहीं कर सकते आप,
जिस चीज को नेचर ने आपके अंदर दिया है आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते। आप समझिए, समझ गए ना बात? जैसे हमारी टीयरी आईज हैं, अवर आईज आर वेल लुब्रिकेटेड। अब हम कहते हैं आंखें सुखा दो जी, पानी सुखा दो आंखों का, आंखों का पानी सुखा दो। अरे सुखा देगा पानी तो आंख खत्म हो जाएगी तेरी, तो अंधा हो जाएगा। ये समझो, इसी तरह से कह रहे हैं सब कुछ सुखा दो, इमोशन सुखा दो, लोगों के जीवन में सुख लाओ इमोशन सुखा के। ऐसा है, बाय एलिमिनेटिंग इमोशन पीपल कैन नॉट बिकम हैप्पी, because people can never eliminate emotions as they are ingrained in them. Emotion management is the key. That is the realization that they never had, that the essence is emotional management rather than elimination of emotions. समझ गए ना बात? Because for them emotion meant biasness. ये मतलब था। And then came to the scene a person by the name they keep worker busy, define everything, routinize work, emotions will be eliminated. Eliminated का मतलब not completely removed but reduced. So please louder. What you want to highlight here? No, so he never said man is a machine, but his ideas represented the idea that work should be made mechanistic. Are you getting my point or not? I have never said Taylor said it. I said Taylor is the product of the times when general understanding in scientific community was that human beings are not very thinking, rational, driven by passion people. So work should be made mechanistic. समझ में आ रही है ना बात आपको? It is not that it has come from Taylor's mouth. ये तो मैंने आपसे बोला कि human understanding of human beings has witnessed a paradigm shift over the period of time. Even Elton Mayo did not say man is more than machine, but he represented those times when this idea gained ground that human beings are more than a machine. Are you getting my point or not? That is what the idea is. This is what you need to understand. The word mechanistic approach is guided by the fact that emotions are a bottleneck in success. The point is this. Now we go to Elton Mayo et al. Elton Mayo et al. Did their famous Hawthorne studies. Hawthorne is a place in US where the studies were done. Hawthorne studies which were done in Hawthorne plant of Western Electric Company. Western Electric Company, Hawthorne plant. Et al का मतलब है and others. Hawthorne and others. Hawthorne, Elton Mayo and others. Now what happened? They were interested in studying
How working conditions influence productivity. How working conditions influence productivity. They were interested in studying this. They chose light intensity as one of the variables for manipulation. Light intensity is intensity of illumination. Light intensity as one of the variables. The variable that you choose for manipulation is independent variable. IV, independent variable, the one which you manipulate. And the outcome of this manipulation was productivity, which is DV, dependent variable. The outcome of manipulation of light intensity is productivity, which is dependent variable. Now, what they observed was when light intensity was low, productivity was poor. Natural. You can't see things properly, productivity is poor. When light intensity became better, productivity improved. Common sense. They were very happy with the results. Our understanding is getting acknowledgement here. When light intensity became optimal, productivity further improved. बहुत खुशी की बात है जी, पर जिंदगी में खुशी लंबी नहीं चलती. यही आफत है, यही आफत है लाइफ में. जब ज्यादा मुस्कुरा रहे हो तो अब समय आ चुका है पिटने का. रोना तो फिर भी चल जाए सर, पिटना ये रोलर कोस्टर राइड है लाइफ. ये डिपेंड करता है सर किस उम्र में पिटोगे. और कुछ लोग हैं उन्हें कहते हैं तबला आइटम्स, वो तो बचने के लिए हैं दुनिया में. जो मर्जी करता है, लेदर के ऊपर हाथ मार के चले जाता है. ये सब. अब देखें आगे क्या हुआ. लाइट इंटेंसिटी आफ्टर रीचिंग ऑप्टिमल वॉज मेड सब ऑप्टिमल. बट प्रोडक्टिविटी कंटिन्यूड टू राइज. धीरे धीरे अंधेरा होता चला गया और उत्पादन बढ़ता चला गया. देखो साहब, उजाले में तो हो ही रहा था, ये अंधेरे में भी कलाकारी दिखा रहे हैं. ये देखो, लाइट इंटेंसिटी फर्दर डिक्लाइंड, productivity further continued to rise. It further declined. After suboptimal, it was suboptimal. मतलब और लाइट इंटेंसिटी कम कर दी. प्रोडक्टिविटी स्टिल कंटिन्यू टू राइज. कैसे बेटा? यही तो बात है, जब कुछ किया होगा उन्होंने रात को. प्रोडक्टिविटी कह रहे कैसे बढ़ रही है साहब. And it was found that productivity eventually stopped increasing and fell down when it was almost pitch dark. जब बिल्कुल अंधेरा हो गया ना, तभी प्रोडक्टिविटी गिरी. Now he has asked, how was productivity increasing when light was not appropriate? You can tell me. You seem to have been having some knowledge of PubMed. No problem. Then it is even better. We were just told that this Lightroom experiment, it had no impact on the productivity of the workers. अच्छा,
I will tell you. Now what happened? Ego आ गया. No, basically the thing is when you are appreciated, you work efficiently and चाहे फिर work conditions कैसी आप better provide. नहीं, जो आप नतीजा तो बिल्कुल सही बता रहे हो, लेकिन इसमें कुछ बीच में हुआ था. ईगो आ गया. आपने बिल्कुल सही कहा. इन्होंने बिल्कुल लैंग्वेज इन्होंने जो देसी बोली है वो बिल्कुल परफेक्ट है. उसमें कोई गलत बात नहीं है. आप सही बोल रहे हो. आप दो तीन बातें बोल सकते थे. मतलब टू हैव मोर सोफिस्टिकेशन. दैट प्रोडक्टिविटी रोज even when light intensity declined meant that experiment was not conducted properly. There were some extraneous variables which had crept in the experiment which influenced the outcome. देखो, I want to see how productivity is influenced by light intensity. But I must admit this, light intensity is not the only variable that influences productivity. There can be a host of other variables also other than light intensity that may influence productivity. So it is as a researcher, it is my bounden duty to ensure that variables other than light intensity which can influence the outcome must be held constant. If they are not held constant, then they will intervene to cause negative influence in my findings, as it was observed here. You got the point or not? It should be held constant. Now what happened here was this. जो ये ईगो कह रहे हैं आ गया, बिल्कुल सही कह रहे हूं. What happened here was, number one, workers were a small group. Small group. Small group is one where you have face-to-face interaction. I see your face, you see my face. और जहां चेहरा दिख गया ना, वहां पर जो है जोश आई जाता है. ये है साहब. Small group was characterized by we feeling, intense bond among the workers. बड़े ग्रुप में इंटेंस बॉन्ड नहीं हो सकता सर, छोटे ग्रुप में होता है. जरूरी ये भी नहीं है छोटे ग्रुप में ही हो, पर चांस ज्यादा है. नाउ वर्कर्स हैड excellent relationship with the supervisor. And the supervisor had informed them some people from other organizations have come to see them work. So workers had a feeling of being observed. Now when you are observed, would you not like to give the best impression of yourself to the world or not? This is how it is. And that is why productivity rose. Being observed. देखो सर, ये बात तब नहीं होती अगर रिश्ता आपस में खराब होता, और ये तब भी नहीं होता जब सुपरवाइजर से रिश्ता खराब होता. लेकिन दोनों बातें शानदार थी. What happens when some relative of yours come to your home? That day the standards of cleanliness at home improves. The choice of food items to be served also increase. The biscuits which otherwise were dry now are one with the cream. Okay, the
cup of tea otherwise served half, now is served full with more milk in it. See, the point is this. We want to create best impression, and the language in which otherwise people address to each other at home now also changes. Tu becomes tum, aap, and ji. This is how it is. Instruction दी जाते हैं, खबरदार कोई निक्कर में नहीं घूमेगा. Nobody will show his legs to the uncle. Okay, you will have to cover yourself properly because uncle has bad habit of discovery. Okay, therefore, what? You will cover yourself properly. That is the need of the hour. Best impression of ourselves, and this impression management is maximum when the boy's father or the girl's father is coming to see your son or daughter. उस दिन जो आप भाषा का प्रयोग कर रहे हो ना, वो अमूमन आप करते नहीं. द लैंग्वेज विच यू आर, अंकल, हाँ, ऐसे दबा रहे हो, ऐसे गर्दन दबा रहे हो, ऐसे आप दबाने वाले आदमी नहीं हो गर्दन नॉर्मल में. ये है साहब. दिस इज व्हाट द आइडिया इज, बीइंग ऑब्जर्व्ड. देखो सर, इससे क्या पता चल रहा है? जो इन्होंने बोला, वो ये बोला कि वर्किंग कंडीशंस कैन बी साइडलाइंड इफ इमोशनल बॉन्ड इज स्ट्रांग. देखो, मैं आपको इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं. When I started taking classes with Vajiram, some of those places, if you visit, you cannot stand there for even an hour. I mean, such pathetic conditions, hardly any AC, minimal work, and still people studied, became IAS also. Now, if we were to take classes there, people will sue us for human rights violation. उसका रीजन है साहब, मैंने बताया ना, स्मॉल ग्रुप, more intense bond, relationship stronger between teacher and taught, less impersonal relationship, more personalized touch. People knew that he is interested in teaching us. They knew that, well, probably our success is tied to this type of information which is available. Okay, so therefore, even in hardships, people could continue to prosper. Now, more comfortable conditions, relationships less personal, more impersonal, more complaints. The difference is this. सर, आप ये सुन के ताजुब होगा आपको, कार्तिक अड्डप्पा got rank number 1. He got rank number 1, all India rank number 1. And Vajiram had no history of ever advertising who the topper was. This gentleman shelled money from his own pocket and gave an ad in Hindu newspaper, although a small ad only, that I am very thankful to Mr. Ravindran and Mr. Mukul Patak, because he was a psychology student, to have helped me to get All India rank number 1. Now see the difference. What kind of lobbying for the toppers various institutes do? Why? Because relationships have become impersonal. अच्छा, वो इंस्टीट्यूट का रीजन नहीं है उसमें. Unfortunately, most relationships, thanks excessive consumerism and commodification, have become impersonal. It's not just about teacher and taught. It is also equally about parents and their children. How do parents try to express their love towards their children? By giving them important goods, commodities. So it has brought about commodification. समझ में आ रही है ना बात सर? तो बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग वीक हो गया. द बॉन्ड, द इमोशनल बॉन्ड बिकेम वीक बिकॉज इमोशनल बॉन्ड रिक्वायर्ड व्हाट? इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, रिलेशनशिप बिल्डिंग, and that is not emphasized by present generation because of the fast paced life that we have. That is why I always maintain, where ambition ends, happiness begins. Excessively ambitious people can never be happy. The point is this. But society drives people to becoming more and more ambitious. And as a result of that, more unhappiness. You can see this. Your parents lived a better life than you are living, even when they had fewer gadgets with them.
But they did not struggle with this pollution that we are struggling here. The point is this. Understand like this, sir. This is being observed. So when you are being observed and it is a matter of group pride, we will do everything to make the things happen. Now this showed that ultimately what matters in the organization are the human relationships. Although working conditions are also important, but more importance should be given to human relationships, building up of the bonds. In fact, it was the result of Mayo's effort, Mayo and his colleagues, that personnel management got transformed into human resource development. पर्सनल मैनेजमेंट, इससे पहले पर्सनल मैनेजमेंट हुआ करता था, अब होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. पर्सनल मैनेजमेंट कंसिडर्ड वर्कर्स टू बी अ कॉस्ट सेंटर. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सीज देम एज रिवॉर्ड सेंटर. They are rewarding for the people. What's the point being happy if you are not ambitious? ना अरे यार आप समझे नहीं बात आप. What is the point being happy if you are not ambitious? ये कह रहे हो ना आप. मेरा क्या आप कॉन्टेक्स्ट नहीं समझे सर. अभी मैंने टैक्टफुलनेस लिखवाया था ना आपको. कॉन्टेक्स्ट में अप्रिशिएट करो. इसका मतलब ये है कि जब मैंने ये बोला where ambition ends, people become happy, it does not mean I am advocating staleness. It does not mean I am advocating absence of generativity. I am talking about not being excessively competitive. Competition which eventually turns into bitter rivalry. ये मतलब है सर. आप कॉन्टेक्स्ट समझो. देखिए हर स्टेटमेंट का ना कॉन्टेक्स्ट होता है. इसीलिए मैं आपसे कहता हूं जो कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस है ना, उनको आंसर करने में जो आदमी उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कह रहा है उसकी बात को आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा. बिकॉज सी मेनी टाइम्स यू डोंट नो हु इज द पर्सन. यू माइट नॉट हैव हर्ड अबाउट द थिंकर ऑल्सो, बट इन विच कॉन्टेक्स्ट ही इज सेइंग दैट योर कॉमन सेंस कैन टेल यू. अब जैसे ये स्टेटमेंट बोली, वेयर एम्बिशन एंड्स हैप्पीनेस बिगिंस, इट डज नॉट मीन दैट पीपल शुड नॉट बी एम्बिशियस इन देयर लाइफ. इट नेवर मीन्स दिस. इट सेज दैट लेट अस नॉट बी ओवर एम्बिशियस. इट सेज दैट लेट अस नॉट बी मैड अबाउट रीचिंग द टारगेट्स. इट सेज लेट अस टॉक अबाउट इंक्लूसिव होलिस्टिक ग्रोथ रादर देन ग्रोथ इन अ स्पेसिफिक एरिया. समझे सर बात, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, यह मतलब है. देखिए यह बात तो क्वांटिफाइड है. कमोडिफिकेशन विल इवेंचुअली रिजल्ट इन फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज यू सी व्हेन यू आर इन अ रेस टू एक्यूमुलेट कमोडिटीज, देयर विल ऑलवेज बी पीपल हैविंग मोर देन व्हाट यू हैव, एंड रिलेटिव डेप्रिवेशन फीलिंग विल ऑलवेज बी प्रेजेंट. And frustration is bound to occur. Please understand. So that is why Mahatma Gandhi's quote here becomes relevant when he says, enough for human need, but not enough for human greed. The point is this. अरे सर आपको जूते अच्छे लगते हैं, आप कलेक्ट करो. मुझे तो एक पेयर चाहिए जो मुझे पहनना है, या एक स्पेयर हो जाएगा, चलो भाई एक फट गया तो दूसरा पहन लेंगे. यही, इससे ज्यादा तो चाहिए नहीं. अब कोई कहेगा जी मुझे तो जॉर्डन भी चाहिए, मुझे तो 10 लाख वाला चाहिए जूता. अब 10 लाख वाला तो हम तो सिर पे रखेंगे उसको. देखिए मैं आपको बात बता रहा हूं, तो ये दिस इज हाउ इट इज. दिस इज द पॉइंट हियर. यू गॉट द पॉइंट और नॉट सर? इन दिस कॉन्टेक्स्ट. सो अंडरस्टैंड लाइक दिस. Paradox of affluence means, you know what? Machine has taken over the man. Now I am gadget dependent. For example, if somebody takes away your mobile phone, you feel nervous. You feel nervous for various reasons. Young men may have certain photographs.
which are special to him about Mahatma Gandhi and others. Okay. Which he doesn't want the world to see because they are the source of his inspiration and other person's perspiration. So that could be the reason, or other there could be variety of other reasons. ये मतलब है साहब, समझ रहे हो ना? डिपेंडेंस है, डिपेंडेंस. This is the point here. So they showed what? Number one, importance of small group. Number two, importance of relationships in groups. Number three, including emotions in workplace. And that is why effort should be made for holistic development of the workers. So it changed the way we started seeing things. And today we understand that without emotional intelligence, nothing can be achieved in life. Please understand. Unfortunate it is, in civil services preparation, other than interview, where they can assess your emotional intelligence a little bit, there is no other area of examination where emotional intelligence is assessed. That is a very unfortunate thing. And the job is one where your emotional skills and their display is going to decide the kind of success you are able to generate. So you are measuring something which is of no use in actual execution of the job. This is very ironical because the entire assessment is that of intelligence. But the success in job is decided by emotional intelligence. And other than the interview, there is no other place where they make a concerted effort to check your emotional intelligence. That's a strange thing, but it happens. This is exactly the problem. ये जो ethics का पेपर भी है ना, ये ethical reasoning measure करता है, ethical fiber measure नहीं करता. Your ethics paper doesn't measure the quality of ethics you have. It only measures how skillfully you can lie. That is unfortunate truth. How skillfully you can lie. This is very strange. Because many answers which you write there, never ever you will implement in your life. Or they are not implementable at all. Whatever you want to say. This is our point. Now we go to the last section, and that is significance of emotional intelligence in governance or benefits. ये title लिख लो, benefits of emotional intelligence in governance and administration. Benefits of emotional intelligence in governance and administration. Point number one. Emotional intelligence enables the individual to establish these individuals can be leaders also, and they can also be public administrators, both of them. Enables the individuals, which includes leaders and public administrators, to establish more amicable is friendly, more amicable work climate, which in turn improves organizational performance and productivity, which in turn improves organizational performance and productivity, and as well as satisfaction and commitment of individual workers. Point number two. Leaders with emotional intelligence
are able to establish better communication within the organization. Which in turn reduces or minimizes, whatever you want to write, role ambiguity, ROLE, role, AMBIMB, GUITY, guity, ambiguity, and role conflict. Role ambiguity and role conflict, and as well as interpersonal पहले टरा है, इंटरापर्सनल कॉमा इंटरपर्सनल and intergroup conflict. इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट मतलब हर तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन से हट जाएगा. थर्ड पॉइंट, इमोशनल इंटेलिजेंस enhances group dynamics. It enhances group dynamics. In the terms of cooperation, collaboration, and building bonds. Next point, emotional intelligence improves social capital. Improves social capital, which refers to bonds of mutual respect and care. Mutual respect and care among the members of the collective. Among the members of the collective. Next point, leaders with emotional intelligence can emerge as a change catalyst. They can emerge as a change catalyst and are able to use win-win model, WIN, win, hyphen win, again win, I also win, you also win, win-win model for negotiations. Next, emotionally intelligent individuals can do better time management,
multitasking, and look at the things from holistic perspective. From holistic perspective. Second last point you can write. Leaders with emotional intelligence are able to handle stress better, and therefore are skilled human resource, and therefore are skilled in human resource development and management. Skilled in human resource development and management. And the last point you can write, and that is emotional intelligence enables the leaders and the public administrators to make sense of ambiguous and contradictory messages. And recognize the importance of different elements in the situation. Recognize the importance of different elements in the situation. Now this finishes our part of its role in governance. Now the last section. If by chance they ask you this question, this is the last section before we end. Ways and means to improve emotional intelligence in public administrators. भाई क्या तरीके हैं कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस को इंप्रूव कर लें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स में. सो हियर I must add one thing, that if emotional intelligence is to be improved, पहले तो एक बात सच बता दूं, इमोशनल इंटेलिजेंस कभी इंप्रूव नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि EI इंप्रूव नहीं होता. जो इंप्रूव होता है वो होता है EQ. ये दोनों एक चीज नहीं है. EI is innate potential. It's an innate potential. You are born with it. जैसे आप देखो ना, कुछ लोग टेम्परामेंटली लेस वॉलेटाइल होते हैं. अब जैसे राहुल द्रविड़ जी लेस वॉलेटाइल थे, गंभीर वॉलेटाइल है. नाम तो गंभीर है पर है वॉलेटाइल. ये फर्क है दोनों कोचेस में. इंडिया के 2 क्रिकेट कोचेस में जमीन आसमान का फर्क है सर. मैं बता रहा हूं आपको बात, क्योंकि स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी राहुल द्रविड़ की बहुत जबरदस्त थी. आई टेल यू दिस. दैट इज व्हाई यू विल नॉट फाइंड एनी irrational statement from his mouth. The point is this. So ये क्या है, सब innate potential है.
और इमोशनल क्वोशंट जो है वो है द डिग्री टू विच दिस पोटेंशियल हैज बीन अचीव्ड. दिस पोटेंशियल हैज बीन अचीव्ड. The degree to which this potential has been achieved. This is EQ. So what you can do is, you can use these techniques which I am mentioning to enable the person to achieve his potential. जगह जो अपर लिमिट है उससे ऊपर नहीं जा सकते आप, लेकिन अपर लिमिट को अचीव कर लो, वही बहुत बड़ी बात है. समझ गए ना? अपर लिमिट तो आपकी बायोलॉजी ने डिफाइन कर दी, अब आप उसे अचीव कर लो वो अलग बात है. जैसे आप कितनी कोशिश कर लो, आप 100 मीटर 9 सेकंड में नहीं भाग सकते, 9.5 सेकंड क्या 10 सेकंड में भी नहीं भाग सकते, पर उसेन बोल्ट भाग सकता था, उसने वो अचीव किया. समझ गए ना आप? ये मतलब है साहब. नाउ व्हाट आर द टेक्निक्स? नंबर 1, टू प्रमोट इमोशनल इंटेलिजेंस. अब वो मैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस ही कह रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आई डोंट थिंक दैट दे विल हैव दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन ईआई एंड ईक्यू. तो वो तो आप छोड़ दो, वो तो इमोशनल इंटेलिजेंस ही पूछेंगे, तो आप भी आंसर ऐसे ही करोगे. यूज ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स can help you achieve your EQ, and these can include techniques like meditation, techniques like progressive relaxation, etc. ये तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स है. द सेकेंड सेट ऑफ टेक्निक्स training in positive self-talk. Now this is very essential to build motivation. Positive self-talk. Goal setting techniques. You set realistic goals. That is also the part of emotional intelligence build-up. Awareness building programs. Awareness not only of the surroundings, but also self-awareness. These can help. Sensitivity training. Sensitivity training. Sensitivity training makes a person learn that how his actions cause distress to others, and what he can do to ensure that by his actions others feel comfortable. यह मतलब है. Cognitive restructuring exercises. Cognitive restructuring exercises means that you restructure the way people think. You can restructure also the way people think.
problem with most people is that they think in absolutistic terms, whereas life will always be lived on relative terms. तो ये इस तरह से इसको रीस्ट्रक्चर करते हैं. बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, ये यहां तो डिस्कस नहीं हो सकती, बस मेंशन कर रहा हूं नाम. Attention focus training. Focus your attention on relevant cues. Relevant cues. हर जगह अटेंशन फोकस नहीं करना. सर एनर्जी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है. लिमिटेड ही है एनर्जी, अनलिमिटेड नहीं है. तो सर ऐसा है, आप रेलिवेंट टास्क पे फोकस करो ना, जो आपके लिए रेलिवेंट है, उस पर बहुत जरूरी है. लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसमें क्यों फोकस करना है, उसकी एनर्जी वेस्ट है. वो व्हाट अदर पर्सन इज डूइंग इज इमटेरियल टू मी, व्हाट आई एम डूइंग इज मोर इंपॉर्टेंट. आई मस्ट फोकस ऑन इट. Role playing. When you play various roles, your emotional intelligence improves. Communication training. And the last, communication training. This is also very important. And the last one is assertiveness training, so that people do not take advantage of you. Assertiveness training, so that they don't take your advantage. This is called as assertiveness training. Yes, sir. Role playing मतलब जैसे आप और मैं करते हैं. You play a role of a student, then you play a role of a teacher. When you play a role of a teacher, you realize that how my activities can impact my teacher unfavorably, which as a student you might not understand. Role playing. जैसे आपके पिताजी भी कई बार कहते होंगे ना, यार देखो जैसा जब मैं जो है आप पिता बनोगे तब आपको रियलाइज होगा कि भाई कितना एफर्ट लगता है बच्चे को बड़ा करने में. वो आदमी वैसे नहीं समझ पाता, जब खुद वो रोल खेलता है तब. बस लास्ट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि अगर आप ये टेक्निक्स जितनी भी हैं देखें तो इनका फोकस एक ही है, और वो है रीसोशलाइजेशन. आदमी का जो सोशलाइजेशन हुआ है अगर वही प्रॉपर होता तो इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप हो जाता. लेकिन क्योंकि सोशलाइजेशन में कमी रही, इसलिए हमें जरूरत पड़ रही है कि हम ये टेक्निक का इस्तेमाल करें. अच्छा, सोशलाइजेशन में हम सबके कमी है, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका सोशलाइजेशन परफेक्ट है. सबके के कमी है साहब. वो इसलिए कमी है क्योंकि हो सकता है आप बड़े विद्वान हो, यू नो एवरीथिंग, बट द पॉइंट इज फादर कैन नॉट रिप्लेस मदर in the life of the child. The impact which father can put is only half. So you can create positivity, you can create, positive mindset, you can restructure the child to think properly, but then the other person may destroy it. That is why parenting is such a difficult task. Not only that child will frustrate you on many occasions, that's a separate thing. The point is, at home, not everybody's tolerance level is the same. They are not able to manage their stresses effectively. And that is why problem is caused. I tell you, in most homes there is a problem, that there is hardly any person to speak to. Because each person carries his own agenda. And that is a difficult situation to be in. You see, all of us are in search of confidence builders, empathetic listeners. Empathetic listening is not something which comes naturally to people. You need to train yourself very effectively in it. Why this is so difficult? Because people tend to become judgmental. The moment I tell you something which is not so amazing about me, you become judgmental. Are you getting my point, sir? There to have someone around who will not judge and without any classification of the action as holy or unholy will provide you right guidance, very few. Very few. And that is why socialization is deficient
in lives of all of us in one form or the other. The point is this. So that is why you, me, and all others that you will come across have their own quota of unfinished business. Now, during this life, how you can, by ensuring proper interaction with right kind of people, finish this unfinished business will decide the level of happiness you will have. So we are all engrossed in the grand exercise of finishing our unfinished business, and presently your unfinished business is civil services exam, which you have to finish. The point is this. समझ रहे हो ना बात आप साहब? यही अनफिनिश्ड बिजनेस है, और जिंदगी में कितनी कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ बिजनेस अनफिनिश्ड रह जाएंगे. प्लीज अंडरस्टैंड यार, हैप्पीनेस एंड एम्बिशन पॉइंट बता तो दिया. यही मैंने बोला है हैप्पीनेस और एम्बिशन का, कि इफ आई एम ओवरली एम्बिशियस आई एम लाइकली टू बी अनहैप्पी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एनर्जी विल गो इन इंटेंस राइवलरी डिफीटिंग द अदर्स. बेटा मैं आपको बताऊं, आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी. इसका मतलब आपने ध्यान से नहीं सुनी. ये अंडा है, इसको कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन. मैंने डिस्कस किया था इंस्ट्रूमेंटल वर्सेस इंट्रिंसिक में. आपको बताया था साहब, हैप्पीनेस, जॉय, कंप्लीशन, अचीवमेंट ऑल कम टुगेदर. ऐसा नहीं हो सकता यू आर हैप्पी बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड. दैट कैन नेवर हैपन. If you are happy and you are not satisfied, that means you are a sadist. Then it is sadism. It is not happiness. Let me tell you this. समझ रहे हो ना? So on this note we end. And हाँ बोले साहब, assertiveness training का मतलब है let us not allow people to use us. You have to put your foot down. अब देखिए, एक आदमी एक बार पेशाब करने चला गया, चलो मैंने मान लिया चला गया. अरे दूसरी बार भी जा रहा है, मैंने मान लिया चलो आज इसके टैंक में कोई इन्फेक्शन हुआ है, चलो मान लिया मैंने. अरे रोज जा रहा है, 20-25 बार जा रहा है, तो साहब एक बार तो पूछना पड़ेगा ना, सही सर समस्या क्या है? क्योंकि वो जब जा रहा है तो बीच में बैठा हुआ बिल्कुल 10 आदमियों को हिलाता हुआ जा रहा है. तो सर यहां तो इंटरवीन करना पड़ेगा ना. ये होती है असर्टिवनेस. बर्दाश्त किया मैंने, फिर बर्दाश्त किया, अब बर्दाश्त किया, एक बार तो बताना पड़ेगा ना भाई साहब इलाज कराओ. अगर इतनी जल्दी जल्दी जो है आपको परेशानियां हैं तो एग्जाम कैसे दोगे? बार बार रेस कर देगा, सर वॉशरूम. इन्विजिलेटर कहेगा यार वहीं बैठ जा, वहीं पेपर लिख ले. यहां लिखने की क्या जरूरत है? ये साहब, हाँ जी बोले, आप सवाल पूछ रहे थे कुछ, आप लेट बहुत आए हो. चलो कोई बात नहीं, बताएं. कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी पार्ट है उसका, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज का. कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग बड़ा टर्म है, आप रिस्ट्रक्चर कर रहे हो. बिहेवियर थेरेपी उसका स्पेसिफिक टेक्निक है, और बिहेवियर थेरेपी के अंदर भी 50 हैं, एक नहीं है. हाँ बोले साहब, इससे पहले और को लोग भागे, मैं भी भागूंगा. देखो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है ना सर, वो नहीं, मैं बता रहा हूं उसका रीजन है ना. आपने सुना, आपको अच्छा लगा, लोग जाते हैं प्लेजर के लिए, लेकिन वो ये नहीं समझते कोई भी प्लेजर जो है अगर आपको उसको ब्लिस में कन्वर्ट करना है, ब्लिस, तो आपको पेन के थ्रू जाना पड़ेगा. इंटर करना पड़ेगा, वो तो उसके बगैर तो काम ही नहीं है. लीडर कहां कर पाते? लीडर तो शॉर्ट टर्म करते, लॉन्ग टर्म कहां कर पा रहे भाई? वो तो उनका एम तो यह है कि आप मोटिवेट होकर मुझे वोट कर दो. ये तो स्टेट्स पर्सन होते हैं जो लंबे समय तक लोगों को मोटिवेट कर पाते हैं. आप याद रखें,
You are the product of conditioning that has taken place over many years. You cannot be reconditioned in very small time. इसलिए मोटिवेशनल स्पीच सुनना बिल्कुल बेकार का काम है, ये मैं बता रहा हूं. संदीप हो या कोई हो, जो आदमी संदीप महेश्वरी का दीवाना है ना, उसकी चामेश्वरी निकली हुई है, ये याद रखें. असर्टिवनेस ट्रेनिंग, असर्टिवनेस ट्रेनिंग का होशियार का मतलब थोड़ी ना है. असर्टिवनेस ट्रेनिंग का मतलब यह है योर फ्रीडम एंड्स वेयर माय नोज बिगिंस. भाई आपको मैं बर्दाश्त तो करूंगा, एक लिमिट तक तो करूंगा, उसके बाद तो बताना पड़ेगा ना सर आप भी थोड़ा संयम रखें. ये असर्टिवनेस ट्रेनिंग. एग्रेशन इज अ नेगेटिव टर्म. व्हेन आई लूज माय टेम्पर ऑन समवन, it means I have lost control over my own self. Assertion is a positive term. When I assert, then what happens is it is controlled display of aggression. ये मतलब है. ठीक है साहब. So on this note I finish and I wish you a great success ahead.